गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टेट गारंटीज ऑन बोरोइंग्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई द्वारा, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटी देती है उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो इस वर्किंग ग्रुप में फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीएजी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हैं वो मेंबर्स थे, और इन्होंने एक यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करके दिया है गारंटीज से रिलेटेड। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि गारंटी का क्या मतलब क्या होता है। गारंटी बेसिकली एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है एक स्टेट की, कि किसी भी इन्वेस्टर या लेंडर को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है। सी अगर आकर ये कहता है कि बी ने अगर पैसे नहीं दिए ए को, तो कोई बात नहीं, मैं उसके बिहाफ पर पैसे दूंगा। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि सी जो है वो बी की गारंटी ले रहा है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा क्या करती हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जैसे समझ लो पावर कंपनीज होती हैं, वो अगर कोई लोन लेती हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कहती हैं कि आप इन्हें लोन दे दो, अगर ये नहीं पैसा देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हम आप इनकी तरफ से पैसा देंगे। ठीक है, तो इसको हम सोवरेन गारंटी भी कहते हैं, जिसका यूज़ करते हुए जो स्टेट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वो कंसेशनल लोन्स ले लेती हैं मल्टीलैटरल एजेंसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। फिर जो है पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो इसका इस्तेमाल करते हुए इंटरेस्ट चार्जेस कम मिलते हैं, कम रेट पर उनको लोन मिल जाता है, क्योंकि जो लैंड कर रहा है उनको पैसा, उनको ये गारंटी है कि हाँ उनको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, और अगर ये नहीं देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। तो क्योंकि जो रिस्क बहुत कम है, इसलिए जो है इंटरेस्ट रेट कम पर पैसा जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ले सकती हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज़, इन सब के बिहाफ पर जो है गारंटीज़ लेती हैं। और इन एंटिटीज़ से स्टेट गवर्नमेंट्स कभी कभी कुछ फ़ी भी चार्ज करती होती है इस गारंटी लेने की। ठीक है, तो अब जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं जो इस आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने दी हैं, उसमें कहा गया है कि गारंटी जो है उसको ब्रॉड सेंस में डिफ़ाइन करके सभी इंस्ट्रूमेंट्स उसमें जो है अ, शामिल की जानी चाहिए। चाहे कंडीशनल लोन हो, अनकंडीशनल हो, कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की गारंटी हो, फिजिकल रिस्क हो, ये सब जो है पहले जो है देखा जाना चाहिए। गाइडलाइंस ये भी कह रही हैं कि गवर्नमेंट की जो गारंटीज़ हैं उसको स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ यूज़ मत करें फाइनेंस लेने के लिए, अगर खासकर उन उन स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ की जो है अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो। ठीक है, तो गारंटी देने से पहले जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्क्रूटनाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है। फिर ये भी कहा है कि गारंटी जो दी जाएगी वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की दी जाए, इंटरेस्ट कंपोनेंट की नहीं दी जाए। गारंटी को कहा गया है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की मत दी जाए, और 80% ऑफ प्रोजेक्ट लोन से ऊपर जो है वो नहीं देनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को गारंटी मत दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जो वर्किंग ग्रुप ये भी कह रहा है कि पास्ट रिकॉर्ड भी देखो उस स्टेट ओन्ड एंटिटी का, कि कहीं वो बहुत डिफ़ॉल्ट तो नहीं करती है, और अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है तो स्टेट को जो है गारंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो जो है फिर टैक्स पेयर भर रहा है ना। स्टेट गवर्नमेंट जो भर रही है वो कोई पॉलिटिशियन अपनी जेब से निकाल के तो देता नहीं है, पार्टी फंड से तो देता नहीं है पैसा, अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर का पैसा ही जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस कर रही है, मतलब इन स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के डिफ़ॉल्ट को पब्लिक अपनी जेब से फाइनेंस कर रही है एक तरह से, है ना। तो आरबीआई का जो है वर्किंग ग्रुप ये भी कह रहा है कि जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं उनको कितना लोन दिया गया है एनबीएफसीज या बैंक्स द्वारा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया जाए और पब्लिक में रखा जाए। स्टेट्स जो हैं कोई भी फ्रेश फाइनेंस जो है वो उन एंटिटीज़ को जो अपनी पुराने कमिटमेंट्स को ऑनर करने में डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं उनको मत दें। ठीक है, वैसे वही सेम बात कि अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर पैसा पे करेगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रपोजल्स फॉर ऑफ यूजीसी फॉर गवर्नमेंट एड टू कॉलेजेस। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की हैं कॉलेजेस को ग्रांट्स देने के लिए। 2024 की जो है ये गाइडलाइंस हैं। तो यूजीसी क्या है, सर्जेंट रिपोर्ट में के मुताबिक जो है रिकमेंडेशन दी गई 1944 में कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी होनी चाहिए। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया, और फिर उनके रिकमेंडेशन पर यूजीसी जो है वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ
ऑन द लाइंस ऑफ यूके का यूजीसी बनाया गया और फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया 1953 में। यूजीसी एक्ट के बनाकर 1956 में उसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया। तो बेसिकली ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी है ये कंट्री में। और एनआईआरएफ क्या है? एनआईआरएफ जो है फर्स्ट एवर एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियली तो वॉलेंट्री था, लेकिन 2018 से ये मैंडेटरी हो चुका है सभी गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर हम की हाइलाइट्स देखें इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस की, तो ये न्यू रूल्स कह रहे हैं कि ये सभी कॉलेजेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो भी यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड हैं, चाहे सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज़ को उन्हीं को जो है ग्रांट्स जो है देगा जो कि एनएएसी द्वारा एक्रेडिटेड हैं, और या फिर उनके 60% ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो एनबीए द्वारा एक्रेडिटेड है। और इंस्टीट्यूट्स जिनके एनएसी और एनबीए एक्रेडिटेशन नहीं है, उनकी कम से कम जो है रैंकिंग एनआईआरएफ में ठीक होनी चाहिए। फिर जो ये ड्राफ्ट है ये भी कह रहा है कि रीज़नेबल फ़ी जो है गवर्नमेंट जो है सेट करेगी, वही सिर्फ चार्ज कर सकते हैं वो कॉलेजेस जो ग्रांट्स ले रहे हैं। और 75% टोटल सेंक्शन जो टीचिंग पोस्ट हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए भरी जानी चाहिए इन कॉलेजेस में। ठीक है, तभी उनको ग्रांट मिलेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक टाइगर्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करेंगी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ही पार्ट है। यहाँ पर अबंडेंस में रेड सिल्क कॉटन ट्रीज मिलेंगे। बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर, चौसिंघा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है ये, और कंट्री का ओनली वाइल्ड हैबिटेट है जहाँ पर मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक टाइगर्स या मेलानिस्टिक टाइगर्स क्या है? बेसिकली मेलानिज्म एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें कि मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से स्किन जो है वो ब्लैक होने लगती है या फिर नियरली ब्लैक हो जाती है। हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन जब निकलते हैं तो उससे जो है स्किन के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर आता है। ऑफ कोर्स ये टाइगर्स इंटायरली ब्लैक तो नहीं होते, तो ये इनको हम इसलिए सूडो मेलानिस्टिक कहते हैं। सूडो मेलानिस्टिक बेसिकली एक सिंगल म्यूटेशन इन द जीन की वजह से होता है। और सिमलीपाल ब्लैक टाइगर जो हैं वो कुछ स्मॉल फाउंडिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स की वजह से जो है उनमें ये मेलानिन का जो है ये इफेक्ट देखने को मिला है, तो ये इसीलिए ये सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ने प्लान किया है कि एनटीसीए से अप्रूवल लेंगे। एनटीसीए 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के लिए अप्रूवल दे रही है इस सफारी के लिए। और एनटीसीए एक फिजिबिलिटी स्टडी भी करेंगी बिफोर फाइनल क्लियरेंस। और क्यों किया जा रहा है ऐसा प्लान? ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, रिसर्चर्स, एंथुजियास्ट जो हैं वो देख सकें टाइगर्स को क्लोज से, और उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट की जा सके इनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डीआरआई ऑफिसर्स ने इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट की है 7 कंसाइनमेंट जो कि हांगकांग से आए थे फॉरेन पोस्ट ऑफिस में न्यू दिल्ली में। तो डीआरआई जो है वो एंटी स्मगलिंग मैटर्स को देखता है, प्रीमियर इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सीबीआईटीसी के अंडर आता है ऑफ कोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और ये इंटेलिजेंस अबाउट स्मगलिंग का कलेक्शन करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सहेली। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर नित्यानंद जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली बनाई थी, उनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हो गई है। तो सहेली जो है वर्ल्ड की फर्स्ट एंड ओनली नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो सेंट्रोमैन मतलब ऑर्मिलॉक्सिफिन 30 mg, ये अकेली नॉन स्टेरॉयडल पिल है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 1991 में बनाई लॉन्च की गई थी पिल, और इसको नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में भी 1995 में जो है वो इंक्लूड कर लिया गया। इस अदर जो ब्रांड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें जो है वो हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हार्मोन्स हैं जो कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं विमेन में। और ये विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इनका कंबाइन करके बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही होते हैं, जबकि इनको हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, बट ये मेन में भी होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एल्पेन ग्लो। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एस्ट्रोनॉट हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उन्होंने एल्पेन ग्लो फिनोमिना की जो है फोटोग्राफ भेजी है हिंदू कुश माउंटेन रेंज पर। तो एल्पेन ग्लो एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि माउंटेन स्लोप्स पर देखने को मिलता है जब वो सन द्वारा इल्यूमिनेट होते हैं, जब सन राइज होता है या फिर सनसेट हो रहा होता है। तो ये जो माउंटेन स्लोप्स हैं ये रोज़ी रेडिश या ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, खासकर डॉन और डस्क के टाइम पर रेड, पिंक या ऑरेंज कलर में जनरली देखने को मिलते हैं। और डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, सन की एंगल ऑफ लाइट क्या है, अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं, उसी के हिसाब से जो कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं किन्नो फार्मिंग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किन्नो ग्रोअर्स जो हैं पंजाब के, वो लॉसेस जो है वो अप्रहेंड कर रहे हैं क्योंकि लगभग हाफ ऑफ द क्रॉप जो है वो अभी तक हार्वेस्ट नहीं हुई है और सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो किन्नो फार्मिंग जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो किन्नु एक सिट्रस फ्रूट है। लार्जली नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब में जो है ये कल्टीवेट किया जाता है। हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं इसकी, सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिकोसिया। तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ जूस कंटेंट होता है, इसलिए ये आइडियल होता है जूस एक्सट्रैक्शन के लिए और पल्प के लिए। और ये बहुत ही अच्छे से टेम्परेचर की जो है वेरिएबिलिटी को सहन कर लेता है। एज़ हाई एज़ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एज़ लो एज़ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर लेता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाइट्रोजन हाइपॉक्सिया। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलाबामा ने रिसेंटली डेथ पेनल्टी दी है नाइट्रोजन हाइपॉक्सिया का यूज़ करते हुए एक पर्सन को। नाइट्रोजन हाइपॉक्सिया मतलब, हाइपॉक्सिया बेसिकली मतलब जब बॉडी में ऑक्सीजन कम रह जाती है। नाइट्रोजन हाइपॉक्सिया में क्या किया जाता है कि आपके जो है मतलब जो पर्सन है उसके बॉडी में प्योर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है हाई लेवल पर, ताकि वो जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और वो सांस घुटकर मर जाए। ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है कैपिटल पनिशमेंट देने के बजाय। इसमें क्या होता है कि पर्सन को जो है मास्क पहनाया जाता है और उसको जो है वो पंप की जाती है नाइट्रोजन उसके लंग्स में इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो मर जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो आपको पता है कलरलेस ओडरलेस गैस है, इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में इवन लिक्विड नाइट्रोजन बनाकर भी इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और ये अनरिएक्टिव रहती है एटमॉस्फेयर में, और इवन स्टेनलेस स्टील जैसी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डोगरी फोक डांस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड दिया है जम्मू के डोगरी फोक डांसर रोमालू राम को। तो ये डोगरी फोक डांस दुग्गड़ रीजन ऑफ जम्मू में ये परफॉर्म किया जाता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट द्वारा, जिसमें मेन लीडर जो है वो सॉन्ग को गाता भी है और डांस भी करता है। ड्रम्स और चिमटा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, फंक्शन और सोशल गैदरिंग में ये परफॉर्म किया जाता है। मैन और वेमेन या फिर वेमेन जो हैं इसमें ग्रुप्स में डांस करते हैं और फोक सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is state guarantees on borrowings. This topic is important for your economy section. So recently a working group which was constituted by RBI has made certain recommendations to address the long pending issue of guarantees extended by state governments. So this working group consisted of members from Ministry of Finance, CAG and even some state governments, and they have prescribed a uniform reporting framework for the guarantees which are extended by the state governments, and a uniform guarantee ceiling. So what is the meaning of guarantee? Guarantee is basically a legal obligation of a state to make payments so as to protect the investor or lenders from risk of default by a borrower. So what happens here is that, let us suppose that there is a person A who is entering into a contract with B where B has to pay A after the completion of a project. But how A would trust the B? How A would trust B? So C would come here. C would say that in case B does not pay, I would pay you. Okay. In this case, C is the state government, B is the state government public sector enterprise, and A is the lender or the investor. Okay. So the purpose of guarantees here is that it is basically a sovereign guarantee where the state government, for example, the best example is the power companies. When power companies take loan, the state governments often come as a guarantor to these power companies, and they ask the banks that
give them loans at concessional rates. If they do not pay back, we will pay you back. Okay. So state governments act as guarantors on behalf of state government owned enterprises, cooperative institutions, urban local bodies, or other state government entities. Okay. In return, these entities are required to pay certain commission or fee to these governments, to these state governments. But now recommendations have been made by RBI's working group that this term guarantee should be used in a broader sense, and it should include all instruments, and it must make any distinction between conditional or unconditional financial or performance guarantees so as to assess the fiscal risk. So government guarantees should not be used to obtain finance through state-owned entities, and uh, these state-owned entities should not be allowed to create direct liability or de facto liability on the state government. Okay, because ultimately the taxpayer is paying that in case of default. Okay, so it also further states that government of that guarantee should be given only for the principal amount and the normal interest component of the underlying and not for the interest to be payable. This guarantee should not be extended to external commercial borrowings, and it should not be extended for more than 80% of the project loan. It should not be provided to private sector companies and institutions also. So while giving guarantees, the states should analyze the past record of defaults of that particular state owned enterprise, and a guarantee should be invoked only uh, after analyzing this financial situation of that state owned enterprises, because ultimately of course it would put fiscal stress on the state government, and of course, like I told you earlier, that not any politician nor any political party is going to fund that. Only the taxpayer is going to ultimately bear the burden for it. Okay, so RBI has also asked the banks and NBFCs to disclose the credit which has been extended to state owned enterprises which have been backed by state guarantees. Okay, states must be very careful before extending any fresh finance to entities who have failed in honoring their commitments before. So the next topic is proposals of UGC for government aid to colleges. This topic is important for your governance section. So UGC has released new draft guidelines for granting for giving grants to colleges, and these are the rules for 2024. So UGC is based on the Sargent report, which was the first attempt to formulate a national system of education in 1944, and it recommended the formation of a university grants committee. And just after independence, University Education Commission was established in 1948 under the chairpersonship of Dr. S. Radhakrishnan, who advised that University Grants Committee should be formed on the lines of UGC of UK, and that's why UGC was formally inaugurated in 1953 by the then Education Minister, and it was given a statutory status in 1956. So UGC has the unique distinction of being the only grant giving agency in the country which has been vested with responsibilities of providing funds and coordinating the standards in institutions of higher education. Then what is NIRF? NIRF was launched in 2015, and it is the first ever effort by government outline outline a methodology to rank higher educational institutions in India. It initially was voluntary, but now it has become mandatory since 2018 for all government run educational institutions. So, what are the key highlights of these draft guidelines? So, these new rules will be applicable to every college affiliated to universities which are established by a central or a state act. So, the eligibility criteria to receive grants would involve that the college should have been accredited with the NAAC, at least 60% or at least 60% of the programs should be accredited by NBA, and institutes who do not have NAAC or NBA accreditation, they should at least have been ranked in NIRF, and these colleges should charge a reasonable fee set by the government and should not ask for extra fees. 75% of the total sanctioned teaching posts should be filled, and they should duly follow reservation policy also. Okay, so the next topic is black tigers. This topic is important for your environment section. So Odisha government has recently announced plan to start a melanistic tiger safari near Simlipal Tiger Reserve. So Simlipal Tiger Reserve is a tiger reserve in Mayurbhanj district of Odisha, and it is part of the Mayurbhanj Elephant Reserve. So it derives its name from the abundance of red silk cotton trees growing in this area. It is home to Bengal tiger,
Asian elephant, gaur, Chausingha. It is Asia's second largest biosphere after the Gulf of Kutch of Gujarat and the country's only habitat for melanistic Royal Bengal tigers. So, what are these black tigers or melanistic tigers? So, basically, melanism is a genetic condition in which there is increased production of melanin, which results in black or nearly black appearance of skin, feathers, or hair in animal. So, higher than normal levels of melanin causes this blackish coat on the skin, and these tigers are of course not entirely black. That's why they are also called pseudomelanistic. So what makes these tigers pseudomelanistic? There is a single mutation in their gene which causes this mutation or and increased production of melanin. Okay, so what is plan of Odisha for melanistic tiger safari? So of course they have already received the NTCA approval for this safari. Around 200 hectares of land has been identified for the proposed safari, and TCA will be visiting the proposed site to carry out a feasibility study before giving a final clearance. And why Odisha is coming up with this plan? Because they want to allow wildlife conservationists, researchers, and enthusiasts to see the rare big cats from up close and to create awareness about the need for their conservation. Okay. So the next topic is Directorate of Revenue Intelligence. This topic is important for your governance section. So DRI officers have developed an intelligence and intercepted have developed an intelligence, and they have intercepted 7 consignments which had arrived from Hong Kong at the Foreign Post Office in New Delhi recently. So DRI is the premier intelligence and enforcement agency of Government of India on anti-smuggling matters. It works under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, and it functions as the collector of intelligence about smuggling. It acts upon it. It keeps watch over important seizures and investigation cases. It guides important investigation and prosecution cases. It also keeps statistics of seizures and price rates, conducts studies and suggests remedies for any loophole in the law. It also keeps in liaison with agencies like CBI and Income Tax Department for action under the Income Tax Act. So its headquarters is located in New Delhi, of course. So the next topic is Saheli. This topic is important for your social issues. So Dr. Nitya Anand, who discovered India's first oral contraceptive pill, Saheli, has passed away recently. So Saheli is the world's first and only non-steroidal contraceptive pill. Saheli, also called Centroman, is the only non-steroidal pill with zero side effects available in the world. It was launched in 1991. Otherwise, the oral contraceptive pills contain hormones or steroids like estrogen and progesterone. And Saheli is free of these steroids, and that's why this drug was included in the National Family Welfare Program in 1995. So, what is estrogen and progesterone? These are the hormones which are important for sexual and reproductive development in women, and they are both important for menstrual cycle and maintenance of pregnancy in females, and they are combinedly prescribed in birth control pills and hormone replacement therapy in females. Of course, they are often thought of as female hormones, but they are present in men also. So the next topic is alpenglow. This topic is important for your science and tech section. So an astronaut stationed in ISS, or International Space Station, has recently shared images showing the alpenglow phenomena near the Hindu Kush mountain range. Alpenglow is a natural phenomena when mountain slopes are illuminated by the sun during the dusk and dawn period. So the slopes turn a rosy, reddish, or an orange hue, and it occurs generally during twilight hours before or after sunset. So this alpenglow typically occurs in the range of colors between red, pink, and orange, and its vibrancy and color depends on the location of the sun, angle of the light, and other atmospheric conditions like cloud, humidity, and particulates. So the next topic is quinoa farming. This topic is important for your environment section. So quinoa growers in Punjab are apprehending losses this season because nearly half of the 13 lakh tons of crop are yet to be harvested, and the season will end in less than 2 months. Quinoa is basically a citrus fruit. It is largely cultivated in North India, and Punjab holds the major share of it. So it is a hybrid of two varieties of citrus fruit, Citrus nobilis and Citrus deliciosa. So it comprises a high amount of juice content, makes it
which makes it ideal for extracting juice and pulp. So it can be grown successfully in temperature range of 10 to 35 degrees Celsius, and it has the ability to withstand soaring temperatures as high as 40 degrees Celsius during summer and 0 degrees Celsius during winters. So the next topic is nitrogen hypoxia. This topic is important for your science and tech section. So recently a man from Alabama was successfully executed using the nitrogen hypoxia method. So nitrogen hypoxia, basically hypoxia is a medical term for a state of insufficient oxygen in the body. Nitrogen hypoxia is a process where pure nitrogen gas or high concentration of nitrogen gas, which is enough to be lethal, is inhaled to the point of causing asphyxiation. So it is a relatively new alternative to more common forms of capital punishment. So in this method, the execution is done uh, uh, by forcing the person to wear the respirator mask or the on the inmate's face, and pure nitrogen is then pumped into the person's lungs instead of oxygen. So it leads to unconscious state and then death from lack of oxygen. Okay. So what is nitrogen? Nitrogen, of course, is a colorless, odorless gas. It is important for plant growth. It is important for chemical industry, including for stainless steel. It is also used to provide an unreactive atmosphere in certain industries like preserving foods, and even liquid nitrogen is used as a refrigerant. So the next topic is Dogri folk dance. This topic is important for your art and culture section. So recently, Union Government of India has conferred the Padma Shri Award to Jammu's Dogri folk dancer Romelo Ram. So Dogri folk dance is a dance performed in Dugad region of Jammu. It is generally performed by a group of artists whose main leader sings the song as well as dances, while others in the sitting position provide beats of drums and chimta. It is performed in functions and social gatherings. There are other varieties of this of this dance also, where the men and women or only women perform dance in groups to the music of some famous folk song in colorful traditional dance dresses. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.